I'm Hiran Chandra Bora, scientist team, and along with me, Mr. Vikram Thaka is here from MNR's side, and we are also having our developer team who is developing this portal. Ms. Rion is here. Then we're also having RSC vendor team and vertical, and all the vendors who are here. Most of the vendors, leading vendors are here. So just for a brief introduction, I want. I think I'm audible. People are saying that no voice, but I believe if there is such issue, then you kindly log out and re-log in. Okay. So thank you all vendors. This is Portal 2.0. This is being developed along with the ongoing portal of which is Portal 1.1 we say. So this is for PM Surya Ghar program, and this portal we have tested with our internal team, and after testing with internal team, we thought that it is always better to give a glimpse of the portal to our vendors so that they are they can contribute a few more suggestions or improvements or any bugs, whatever it may be. So they can help us in getting those suggestions. So that's why we are giving this demo. And another reason is that we are also parallelly going to conduct the UAT of the portal. That is a separate exercise. It is going to be done from Monday onwards. So for a few bidders will also be involved. Few discounts will be involved in this process. But for today, we are going to give the demo. So don't worry, people are here. They will also because there is a language constraint in many parts of the country. So we will try to give the training in Hindi as well as in English. So दोनों में हम लोग आपको training देने की कोशिश करेंगे. Yeah, and I expect that your valuable suggestions and valuable comments you will put in the chat box. आप chat box में डालना अपना जो भी comments है. We will go through those chats. We will try to address few of the chats, and but definitely we are going to see those chats after them training also. So with this, I want to thank you, and I want to start the training program. Over to you, everyone. Thank you, sir. Thank you. It is already visible to you. Yes, it is visible. All right. So welcome everyone to the demo of Portal 2.0 vendor module. So currently what you see on the screen is the home page of the new RTS Portal 2.0. And when you have to go to a vendor, then you have to click on the login and select the vendor login. On this vendor login, on the left side you see the steps that is necessary for the registration of the vendor, and on the right side you can log in using your existing user email ID or the password and the password. Okay. We'll first start with the registration process. So for the registration of a new vendor on this portal, a user has to click on register now button, and this is the first step of the registration, wherein the vendor has to select the company type, whether it's a proprietorship, partnership, LLP, private, public, or other. If the vendor is selecting the company type as public, then there's one more option displayed whether the vendor is registered as a CPSU. If yes, then on the next page, these vendor are exempted from submitting the bank guarantee. If it's a no, then they have to submit the bank guarantee. And in other company type, we are not showing this option of a CPSU. It's just shown in the public. Then you have to enter the PAN number, registered PAN number, and upload a PAN copy. So this could be either a JPG, a JPG, JPEG, or a PDF format.
वापस आना पड़ेगा। ओके ओके। अब दोबारा से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जब आपको अ, ये हमारा 2.0 पोर्टल का होम पेज है। यहाँ पे जब आपको वेंडर के सेक्शन में जाना है, वेंडर मॉड्यूल में, तो लॉगिन बटन से आपको यहाँ पे वेंडर लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आओगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वेंडर के स्टेप्स दिखाई देंगे जब उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और राइट साइड में आपको ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है, और इसके क्लिक के ऊपर आप इस पेज पे नेविगेट करोगे, जो कि आपका पहला स्टेप है वेंडर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको कंपनी टाइप सिलेक्ट करना है। आपकी कंपनी टाइप प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट, पब्लिक और अदर। अगर आपने यहाँ पे कंपनी टाइप को पब्लिक सिलेक्ट किया है, तो आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप एक सीपीएसयू है। अगर हाँ, तो फिर अगले पेज पे आपको बैंक गारंटी सबमिट नहीं करना है। अगर आपने ना नो सिलेक्ट किया है, तो ही आपको बैंक गारंटी सबमिट करना है, और बाकी किसी हर इसमें कंपनी टाइप में आपको बैंक गारंटी सबमिट करना ही है। फिर यहाँ पे आपको एक पैन कार्ड, पैन नंबर डालना है, और एक पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करना है। Once all the details are entered over here, then we'll click on the next step button, and we'll land upon this page wherein the details of the vendor registration has to be entered, basically the company details. Okay. Here first you have to enter the organization name, and you have to choose one of the username, and this username you will be using for login purpose. So if you enter any existing username, then this will show a message that it's a duplicate. So we have to select a unique one. Then we have to enter a valid email ID and a valid mobile number. This email and the mobile ID will receive an OTP. So this has to be a valid one. Then you have to select the state and the district. Enter address. Enter a PIN code. Select a password. This password must have the length of minimum 8 characters, one uppercase, one lowercase, and one special character. Confirm the same password in the next text box. Enter the GST number. This is optional. Then you have to upload the key manpower training credential and the service provider credential. Sorry, the service provider declaration. Both are mandatory. And over here you have to select the type of the registration, whether you are registering as a national vendor or a state or a multi-state vendor. So in case of a national vendor, you just have to select this radio button and no pop-up will be shown. But if you are selecting as a state or a multi-state vendor, then a pop-up will appear wherein all the union territories and the state list are shown. And here you'll have to select the check boxes in which you wish to be operational. Then you have to enter the bank guarantee detail. Now, as said before, like if you are a public, the company type is public and CPSU, then this is accepted. Enter the
bank guarantee document. And over here, you can download the bank guarantee format and the declaration. And on click of this, you will see the bank guarantee details. Okay. So अगेन हम अब ये फिर से पेज के बारे में बात करते हैं। तो ये पेज जब आपने पहले बार पैन नंबर और उसका कॉपी अपलोड कर दिया है, फिर नेक्स्ट बटन के क्लिक पे आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको आपके वेंडर का ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है और एक यूजर नेम डालना है। ये जो यूजर नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ये यूजर नेम यूज होगा आपके लॉगिन के वक्त। फिर आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा, जो कि आपको अगले पेज पे डालना है फॉर वैलिडेशन पर्पस। फिर आपको यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है इस यूज़र आईडी के लिए, और ये पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट अपर केस में और एक अल्फ़ाबेट लोअर केस में, ये मैंडेटरी है। फिर आपको आपके पास अगर आप कोई जीएसटी नंबर है, वैलिड जीएसटी नंबर, आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे आपको की मैन पावर एंड ट्रेनिंग क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सर्विस प्रोवाइडर डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अ, फिर आपको नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइप सिलेक्ट करना है, वेंडर, मतलब कि आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे नेशनल वेंडर हो या स्टेट और मल्टी स्टेट। अगर आपने खुद को यहाँ पे नेशनल वेंडर सिलेक्ट किए तो अ, कोई पॉपअप नहीं आएगा, सारे स्टेट्स आपके वेंडर अकाउंट के अगेंस्ट रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टेट और मल्टी स्टेट सिलेक्ट करते हो तो जो एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप में आपको सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट आएगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टेट और यूनियन टेरिटरी और सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप उसी स्टेट और मल्टी स्टेट के लिए रजिस्टर होंगे। अगर आपने एक नेशनल वेंडर या तो मल्टी स्टेट सिलेक्ट किया है, मल्टी स्टेट यानी कि एक से ज्यादा आपने स्टेट को सिलेक्ट किए हो, तो आपका जो वेंडर का अप्रूवल है वो आरईसी के पास जाएगा। अगर आपने केवल एक ही सिलेक्ट किए हो स्टेट को, तो आपका जो वेंडर अप्रूवल है ये डिस्कॉम के पास जाएगा। फिर नीचे आपको ये बैंक गारंटी डिटेल एंटर करनी है, जहाँ पे आपको एक बैंक नेम सिलेक्ट करना है और फिर बैंक बीजी नंबर एंटर करना है जो आपके पास है, बैंक गारंटी डेट सिलेक्ट करना है और एक्सपायरी डेट बैंक गारंटी का, ये दो सिलेक्ट करना है। ध्यान में रखिए कि आपके पास आप जो भी यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे, तो जो एक्सपायरी डेट होगा उसका वो 5 साल बाद ही होगा। तो मिनिमम कम से कम आपके पास 5 साल की बैंक गारंटी होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। So on this page, we have now the we have to enter the OTPs that we'll receive on the email and the mobile, which we entered on the previous page. To receive the OTP, we have to click on the send OTP button over here, and you'll get this message that this OTP that you have received is only valid for 3 minutes, and similarly for the mobile. I have received the OTP. This is for the email. Okay, so these two OTPs I have already entered, and I'll click on the final submit button. ओके, तो इस पेज पे अभी आपको ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है ओटीपी से। तो जब आपने पहले पेज पे जो ईमेल और मोबाइल नंबर डाले थे, उस पे आपको वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और यहाँ पे सेंड ओटीपी एक बटन था। इस सेंड ओटीपी बटन के क्लिक पे आपको ओटीपी मिलेगा इस ईमेल और मोबाइल नंबर पे। तो जो आपको ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी आया है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एक बार सही ओटीपी एंटर कर दिया है तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा और आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है।
At the end we have to click on this final submit. So लास्ट में आपको ये final submit बटन पे क्लिक करना है. तो एक बार सबमिट सक्सेस हो गया तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और एक डिस्कॉम या तो आरईसी के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है. डिस्कॉम और आर एडमिन से आरईसी एडमिन से एक बार आपको अप्रूवल मिल गया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल डाले हैं उसके ऊपर कि डिस्कॉम हैज अप्रूव्ड योर रिक्वेस्ट. Once that is done, then you can log in with those credentials that you have registered. So I'm logging in now. Just a minute. So अगर आपने कोई ऐसे मोबाइल नंबर से या यूजर नेम से रजिस्टर किए हैं जिसपे आपने रजिस्टर तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है लेकिन डिस्कॉम या एडमिन से आपको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है तो फिर आपको पास ये मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक अप्रूवल में है. अभी मैं एक अप्रूव कर देता हूँ. ये हमने अप्रूव किए हैं. ठीक है तो अप्रूव हो जाने के बाद so whenever after once you have received the approval from the discom or the rec admin and then you try to log in for the very first time with your credentials then you'll see this pop up for the first time wherein we are encouraging you to complete the profile and select the operational district where you will be providing your services. So here on this page, it is mandatory to add the personal details. Wherever the mandatory things are there, it is highlighted with this asterisk, red asterisk. Then you have to enter the bank details. This is in this bank details, you will be receiving the subsidy amount once the consumer loan is sanctioned. Account number you have to enter correctly in both the fields. Then you have to upload a checkbook or the passbook copy. And the bank guarantee that you have already submitted is also shown over here, and that status is approved. Once you click on the submit button, then again you'll get this pop-up again because we are asking here to complete your profile as well as the operational district. So now we have completed the profile. You close this pop-up again, go to the operational district section and select this vendor. I'll add this operational district over here.
and click on the save. So as soon as I click on the save button, then I'll land up on this page where this is the dashboard and all the functionalities of that of the vendor model is now available. Previously there was only two: edit profile and the operational district. Uh, ओके, अब हम दोबारा से ये देखते हैं। आप आपने जो वेंडर का रजिस्ट्रेशन किए थे, एक बार वो अप्रूव हो चुका है डिस्कॉम या आरईसी एडमिन से, तो उसके बाद हम यहाँ पे उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे। तो जब भी आप पहली बार लॉगिन करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपका जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट करना है और जो ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है उनको सिलेक्ट करना है। ये दोनों जब तक आप ऐड नहीं करते तब तक आपको पूरा एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन है, यहाँ पे जो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसको हम एंटर करेंगे। मैंडेटरी चीज़ों को हमने यहाँ पे रेड एस्टेरिस्क से हाईलाइट भी किया है। और यहाँ पे अभी आपको बैंक डिटेल्स ऐड करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दोनों जगह पे ठीक से डालना है जो मैच होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे सिलेक्ट करके आपके अकाउंट का पासबुक कॉपी या तो चेक कॉपी अपलोड करना है। यहाँ पे आपको वो लास्ट में वो दिखाई देगा जहाँ पे आप जो अपने बैंक गारंटी रजिस्ट्रेशन के दौरान सबमिट किए थे। एक बार ये सब हो चुका है तो अभी यहाँ पे मेन्यू में आपको केवल दो चीज़ें दिख रही है: एडिट प्रोफाइल और ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये पूरा विंडो रीलोड होके आपको पूरा दिखाई देगा। अभी यहाँ पे कुछ रह गया है। हाँ, ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो आपको यहाँ पे ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट किया हमने, सारे ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐड किया, सेव करूँगा। तो ये सेव के क्लिक पे आपको पूरा पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम एक लॉगिन करते हैं दूसरे वेंडर से। So now after login with an existing vendor, uh, this is the landing page wherein we are showing the dashboard. Here you will see the count of the application which are available at a different stages. Okay, so you can just apply the filter over here as per whatever the count you want to see, and this count will be updated accordingly. The next we have is the interested consumer list. Uh, Here basically like all the consumer who has shown interest in you and want to discuss further about their installation on their home. So this those consumer will click on the show interest button in their consumer profile, and those interests you will see over here. Here we are also showing like since when this
request is pending at your end. So like this was 20 days ago, then 14 days ago, and these two are have shown interest today. uh, Once you have received this information, then we are showing the mobile number and the email of that particular consumer. You may directly contact them using these contact details. Then you have an option to mark them as whether the consumer has interest in the installation of the rooftop, or the consumer is not picking up the phone, or you have rejected its request. Accordingly, whenever you select over here, you'll get one confirmation pop-up. Once you select yes over it, then in the completed tab, uh, you'll see this entry over here and the status that you have selected. So again, if I select consumer has not picked up the phone, so again here we have the status consumer has not picked up the phone. Okay, so अगेन इन हिंदी, जब आप एक अपने एग्जिस्टिंग वेंडर से लॉगिन करोगे तो आपको ये लैंडिंग पेज मिलेगा। यहाँ पे आप डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड पे आपको काउंट मिलेंगे जो एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे है। यहाँ पे आप अपना फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्कॉम सिलेक्ट कर सकते हो। जो स्टेट में आप ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, सिर्फ़ वही स्टेट दिखाई देंगे यहाँ पे आपको, और डिस्ट्रिक्ट भी वही दिखाई देंगे जो आपने ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद इंटरेस्टेड कंज़्यूमर का पेज है। इस पेज पे आपको वो सारे कंज़्यूमर की लिस्ट मिलेगी जिन्होंने आपको इंटरेस्ट शो किया है। तो इस कंज्यूमर का आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर कंज्यूमर ने मेंशन किया है ईमेल आईडी, तो ये दोनों आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अ, आप इस ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा उसको कांटेक्ट कर सकते हो। अ, आपने एक बार इससे बात कर लिया है तो अकॉर्डिंगली आप इस लिस्ट से, पेंडिंग लिस्ट से इस कंज्यूमर को हटाने के लिए आपको एक्शन मेन्यू में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि अगर कंज्यूमर ने बात हुई और कंज्यूमर इंटरेस्टेड है, या कंज्यूमर ने फोन नहीं उठाया, या आपने इसका रिक्वेस्ट जो था वो रिजेक्ट कर दिया है। आप जो भी यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अभी मैंने रिक्वेस्ट रिजेक्टेड सिलेक्ट किया है, तो वो जो एंट्री है वो यहाँ पे कंप्लीटेड सेक्शन में चली जाएगी और यहाँ पे आपको स्टेटस समझ में आ जाएगा कि आपको इस कंज्यूमर ने कांटेक्ट किया था और फिर आपने इस पे इंटरेस्ट किया है, इसने इस कंज्यूमर ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था और ये वाला कंज्यूमर से मेरी बात हुई लेकिन रिजेक्ट हो गया। Okay. The next section we have is the consumer request list. On this page, consumer, we have given the provision to the consumer where consumer will select you as a vendor to fill up the application form on his behalf. Okay, and uh, all those requests will be shown over here under the pending request. So the date on which is like here as well, we are showing on how many days ago that consumer has requested. uh, Again, we are showing the same contact details of the consumer, and first you'll connect with them directly through the mobile number or the email, and then you will select whether to accept or to reject. If you select accept, then that particular application will move under the accepted request tab over here, and you can start the application. Similarly, if you don't want to accept this, you may only click on the reject, and this application will move directly under the reject section. Under the accept section, I'll first accept this. Okay. Under this section, when uh, you have to start filling up the application, then you merely have to click on this application, start application button, and this pop-up will pop up. Okay. तो जो हमारा अगला पेज है वो है कंज्यूमर रिक्वेस्ट लिस्ट। इस पेज पे आपको
अ, वो सारे कंज्यूमर की डिटेल्स मिलेंगी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है आपको एज अ वेंडर फॉर्म भरने के लिए उनका। यहाँ पे आपको लास्ट में एक्शन मेन्यू है। इस एक्शन मेन्यू में आप किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। जो भी आप मेन्यू सिलेक्ट करोगे वो इस पेज टैब में जाएगा। जो भी एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टेड टैब में जाएगा और रिजेक्टेड रिक्वेस्ट रिजेक्टेड टैब में जाएगा। अ, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अभी आपको इस कंज्यूमर का फॉर्म भरना है। तो उस फॉर्म भरने के लिए आपको स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है और ये एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आप एप्लीकेशन उनका भरना स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट जो किया है इसके अगेंस्ट जितने भी डिस्कॉम्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी मैं नांदेड़ सिलेक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास ये है। यहाँ पे मैं नागपुर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कंज्यूमर नंबर ऐड अप करूँगा। तो यहाँ पे अभी मैंने एक कंज्यूमर नंबर ऐड किया है और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं अगले पेज पे चला जाऊँगा। So when you have started filling up the application, you merely have to click on the start application button and this pop-up will open. On this pop-up, you have to select the state and the district. Uh, the list of the discount will be displayed. The list of the discount will be displayed based on the selected district, and you have to enter the consumer account number which the consumer has shared with you when you have contacted them. Then you have to click on the fetch details button, and after clicking on this, you'll have this details of the consumer available with you. And once everything is done, just click on the next button. On this page, you have to select, fill up the entire form, and you have to select the gender, and then the type of the location. This is mandatory whether it's a rural or urban. So if I'm selected as urban, then we have to enter the local body name. If I'm selecting this as a rural, then I have to enter the development block or the taluka or the village panchayat. So in case of rural there are two mandatory things, and in case of urban there is one. In the second panel, you see all the details that are fetched directly from the Discom API. And once all these details are available, these are not edited anymore. Then you have to select the category over here, whether the consumer is applying under the residential category or the residential welfare association category. So if he has selected residential welfare association, that is RWA, then the number he has to enter the number of the houses over here. Then you have to enter the proposed solar plant capacity. Here we are showing the sanction load which we received from the Discom API. Then the existing solar capacity over here, and I'm selecting as 1.5 kilowatt first. Say okay, and then you have to click on this pick from map button, wherein you have to select the latitude and the longitude. So for that, I'll click on this pick from map. Now this district is fenced, like you have to now select uh, the location within this highlighted district only. You cannot click outside the district. As soon as you click on it, you'll get one pop-up that you have clicked outside the highlighted district. So select any location within here.
and then you can upload the documents over here. And and then the document you have to upload the electricity bill from the last 6 months, and finally click on the send to consumer button. सो जब आपने ये पेज पे आए हो, इसके पहले वाले पॉपअप पे नेक्स्ट के क्लिक पे, तो आपको यहाँ पे जेंडर एंटर करना है और टाइप ऑफ लोकेशन सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ लोकेशन में आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, रूरल और अर्बन। अगर आपने अर्बन सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी नेम सिलेक्ट करना है, और अगर आपने यहाँ पे रूरल सिलेक्ट किया है, तो आपको डेवलपमेंट ब्लॉक तालुका और विलेज पंचायत को सिलेक्ट करना है। फिर ये पैनल आ जाएगा। यहाँ पे हमने सारे जो डिस्कॉम से हमको डिटेल्स मिले हैं वो सब शो किए हैं, और ये एडिटेबल नहीं है। जो थर्ड पैनल है, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अगर वो रेसिडेंशियल है या आरडब्ल्यूए है। अगर आरडब्ल्यूए सिलेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ द हाउसेस यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। फिर आपको यहाँ पे एक प्रपोज सोलर प्लांट कैपेसिटी डालना है कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो कितने कैपेसिटी का है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको पिक फ्रॉम मैप के से आपको एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट करना है। तो जब आप पिक फ्रॉम मैप पे क्लिक करोगे, तो ये एक भारत मैप लोड होगा, और ये एक डिस्ट्रिक्ट जो नागपुर हमने सिलेक्ट किया है उसी में फेंसिंग लगाई हुई है। तो आप इसके बाहर कहीं पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप जब करोगे तो आपको ये पॉपअप आएगा कि आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं, तो जो भी आपका सिलेक्शन है ये सिर्फ हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। अगर आप एक लोकेशन को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप सिलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे, तो जो आपने सिलेक्टेड लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे एंटर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपलोड कर सकते हो, जो कि पिछले 6 महीने के अंदर का होगा। ओके। और फाइनली आपको जब ये फॉर्म आपके एंड से सबमिट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, तो आपको यहाँ पे सेंड टू कंज्यूमर बटन पे क्लिक करना है। तो हमने ये वाला फॉर्म भरा, तो जो सेंड टू कंज्यूमर किए, तो फिर यहाँ पे जो पहले स्टार्ट एप्लीकेशन था वो अभी कंफर्मेशन पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब हम इस कंज्यूमर के लॉगिन करेंगे नंबर से, और अ, जो आपने कंज्यूमर को फॉर्म सेंड किया है, वो कंज्यूमर को रिव्यू करना है पूरा फॉर्म, और उसको फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे मैं कंज्यूमर नंबर से लॉगिन करता हूँ। तो कंज्यूमर माई एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे व्यू बटन पे जब कंज्यूमर क्लिक करेगा, तो उसका ये पूरा फॉर्म जैसा आपने भरा था वो पूरा दिखाई देगा। और कंज्यूमर ये फॉर्म को एडिट नहीं कर सकता, ये सिर्फ कंज्यूमर व्यू कर सकता है। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगा कि किसी पॉइंट पे कि ये जो डिटेल्स है ये उसमें कुछ गलत है या करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे सेंड बैक टू वेंडर पे क्लिक करेगा, और ये फॉर्म दोबारा आपके साइड ओपन हो जाएगा एडिट करने के लिए। अगर कंज्यूमर को लगता है कि ये पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो सही है, तो उसको ये कंज्यूमर ने यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा। तो सबमिट के क्लिक पे ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आप इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर अपलोडिंग द एग्रीमेंट। सो आफ्टर एक्सेप्ट आई एम
right now logged in with the consumer for which the vendor has filled up the form. So under the My Application on the consumer homepage, uh, I clicked on this view button and this form will open up. On this form, the entire form is non-editable for the consumer. He can just view the form and its corresponding details. At any point of time, if the consumer feels that the entered details are incorrect, then he can surely send this form back to the vendor by clicking on this send back to vendor. So when he clicks on it, then he'll get one remark column where he can mention that what the things were wrongly mentioned in this form. Accordingly, vendor can correct them. If the consumer finds the entire form is correctly filled, then he'll click on this checkbox, and this is basically an acknowledgement where he's uh, just telling that he has verified all the details, and he'll click on the submit button. So once the form is submitted successfully from the consumer, then in this stage, the vendor is also automatically selected, like the vendor who has filled up the form, that particular vendor himself is selected over here. So you can see that the vendor selection is completed and the selection name. All right. So I'll log in with new consumer now. Now we'll fill up one new form via consumer. So for whenever consumer log in, he has to complete the profile, and for the new application, he'll click on the My Application. And here, if there are no existing application, we'll click on the background button over here. This apply for solar rooftop installation, and on click of this, will show the same pop-up as in the vendor. I clicked on the fetch details and now clicking on the next. Now this is the process where consumer is filling up the form and then he'll select you as a vendor. So अब अभी जो हमने देखा तो अभी हमने कंज्यूमर से एक लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद कंज्यूमर अपना प्रोफाइल फिल अप करते हैं और फिर माय एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप बटन पे क्लिक करेंगे। तो वो एक पॉपअप आता है जो कि वैसा ही है जो हमने वेंडर में देखा था। वहाँ पे सब मैंने डिटेल्स डाला है और यहाँ पे इस पेज पे आया हूँ। तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे एक कंज्यूमर फॉर्म खुद से फिल अप करता है और फिल अप होने के बाद वो एक वेंडर को सिलेक्ट करेगा। ओके। अ, जब कंज्यूमर फॉर्म फिल अप करता है तो ये जो पिक फ्रॉम मैप का है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जब वेंडर भरता है फॉर्म तो उसके लिए मैंडेटरी है। एक चीज़ है बताना, जो ये गिव अप सब्सिडी का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके क्लिक के ऊपर एक पॉपअप आता है जहाँ पे लिखा है कि अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए, तो ये आपको ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक पे आपको ये पॉपअप आएगा जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि सब्सिडी कितना है और कितना आपको अकाउंट में कितना जब मिल सकता है। अगर आप ये सब्सिडी नहीं लेना चाहते तो आपको ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देना है।
हम सबमिट करेंगे। अब कंज्यूमर ने फॉर्म खुद से फिलअप किया और सबमिट भी कर दिया। अब कंज्यूमर एक वेंडर को सिलेक्ट कर रहा है, तो जब वो सिलेक्ट करना है तो उसको वहाँ पे सिलेक्ट वेंडर पे क्लिक करना है और फिर वो यहाँ से वेंडर को सिलेक्ट एज सिलेक्ट वेंडर करेगा। So once the consumer has submitted the form successfully from his end, then under the actions on the application section, you will see an option to select the vendor. So for then he'll click over here, and this page will open up where the entire list of the vendors are shown, and he'll search for this particular vendor and then click on the select vendor. So after clicking on the select vendor, we are showing this pop-up where he's sure with the vendor selection, and if he's clicking on the yes, then that vendor is successfully selected. Now we'll go back to the vendor login again. Okay. So the forms which are already filled up by the consumer, and then he has selected you as a vendor, those forms will be displayed under the vendor consent page. Here you can see the details such as the application number, the discom name, the consumer number, the name of the consumer as per the discom, then the contact details of that particular consumer and the proposed capacity. These details are we are showing over here. Uh, on click of the expand button, you'll see the additional details of that particular consumer. So you can either accept it or reject it. If you have to reject it, then entering the remark is very mandatory over here. So you fill up the remark over here and then you click on the reject, then this will move into the reject request tab. Okay. So जब किसी कंज्यूमर ने एक फॉर्म खुद से फिलअप किया है और आपको वेंडर सिलेक्ट किया है, तो आपके लॉगिन में इस फॉर्म का एंट्री आपको वेंडर कंसेंट में मिलेगा और वेंडर कंसेंट में मिलेगा और ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाएगा। यहाँ पे आपको वेंडर कंसेंट में मिलेगा और ये आपको यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखाई देगा। पेंडिंग रिक्वेस्ट में जब आपको ये फॉर्म दिखाई देगा तो यहाँ पे ये एक्शन में आप जब क्लिक करोगे तो आपको इस फॉर्म के एडिशनल डिटेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो ये आपका फॉर्म माई एप्लीकेशन सेक्शन में चला जाएगा, और अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो तो ये यहाँ पे बाजू में जो रिजेक्टेड टैब है यहाँ पे चला जाएगा। तो जब अगर आपको रिजेक्ट करना है तो इसका मैंडेटरी है कमेंट डालना। तो ही ये रिजेक्ट बटन एनेबल होता है। ठीक है, अभी मैं एक इसको एक्सेप्ट करता हूँ। So once that is successfully accepted, then we show this message over here, and then that form is moved under my application. Okay, so on this my application page, you will see list of all the application that has been accepted by you, or those application which are filled up by you. Then here under the actions button, you click on this button, the same similar information as in the previous page, but the additional thing over here is this action menu which was not uh, available before. On click of this action menu, there are three options to upload the agreement, to submit the installation details, and to view the application. So now the consumer, here we are also showing the tracker component wherein the current stage of the application is being shown. The green ones are the stages which are already completed. The blue is the current stage and the gray ones are the pending stages.
So once you have to upload the agreement, then you click on the upload agreement and you choose the file and click on the submit. Then the agreement will be uploaded successfully for this particular consumer. तो आप जब माय एप्लीकेशन पेज पे आओगे तो इस पेज पे आपको वो सारे एप्लीकेशन दिखाएंगे जो आपने एक्सेप्ट किए हैं वेंडर कंसेंट से या तो कंज्यूमर रिक्वेस्ट लिस्ट से आपने खुद ने फॉर्म सबमिट किए हो। इस पेज पे आने के बाद आपको एक्शन जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी सिमिलर है जो आपको वेंडर कंसेंट में दिखाई दिए थे। जो एडिशनल चीज़ है आपके पास यहाँ पे ट्रैकर कंपोनेंट है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन का करंट स्टेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन में है वो कंप्लीट हो चुका है, जो ब्लू है वो इन प्रोग्रेस है और जो ग्रे है वो स्टेज उसका पेंडिंग है। और आपको यहाँ पे राइट साइड में एक्शन वाला एक बटन है। इस अब बटन के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप एग्रीमेंट अपलोड करने के लिए, एक सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल सबमिट करने के लिए और एप्लीकेशन व्यू करने के लिए। ठीक है? अ, अगर आपको इस एप्लीकेशन को व्यू करना है तो सिर्फ आपको इस व्यू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करोगे और एक पॉपअप विंडो में पूरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अ, अगर आपको अपलोड एग्रीमेंट एग्रीमेंट को अपलोड करना है तो अपलोड एग्रीमेंट बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको जो नाम है वो दिखाई देगा, कंज्यूमर नंबर दिखाई देगा, एप्लीकेशन नंबर और कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो अभी हम क्लिक करेंगे चूज फाइल, विल क्लिक ऑन द चूज फाइल एंड अपलोड एग्रीमेंट और सबमिट। एक बार हमने यहाँ से एग्रीमेंट को सबमिट कर दिया है, अब हम इंस्टॉलेशन डिटेल्स को सबमिट करेंगे। So once we have now uploaded the agreement successfully, now we have clicked on the submit installation details, and this is the first stage where the installation details have been submitted. Now this is the form where a consumer has filled up the form. So while consumer is filling up the form, the type of location is not mandatory for the consumer, but when a vendor is filling the submit install when a vendor is filling the installation details, then the type of location and the latitude longitude is very important. So I click here, select the location as urban, and then here we have already the file. I click on pick from map. Okay, this one. ओके, सो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करेंगे हम एक लोकेशन उसको। तो यहाँ पे इस पेज पे ये सबमिट इंस्टॉलेशन का जो पेज है यहाँ पे हमने ये पहला पेज है जहाँ पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स को फिलअप करना स्टार्ट करता है। तो जो टाइप ऑफ लोकेशन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ये कंज्यूमर ने अगर भरा नहीं होगा तो वेंडर को मैंडेटरीली ऐड करना ही है और ये दोनों करने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट बटन एनेबल होगा। The next stage is where he has to enter the details of the inverter and the PV module. So say if he has selected the phase as a single phase, the phase of the inverter, then he has to enter the inverter details. I'll enter the manufacturer over here. The capacity of the inverter, the quantity of the inverter, and click on the add serial number. So here I have added the serial number and click on the save. So this serial number is added successfully. Now similarly, we have to add the solar PV module details. We select the manufacturer of the solar PV module. Then we uh, mention the rating or the capacity of each PV module. Say I say as 450 and the quantity is 2. Now I'll click on the add serial number. Now on this page, I'll enter the details.
So I have added the serial numbers over here, and the next is the 7 next. So at the bottom we see the in total inverter capacity and the total module capacity. ओके, सो ये पेज पे आपको इन्वर्टर और पीवी मॉड्यूल के डिटेल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे पहले आप फेज ऑफ द इन्वर्टर सेलेक्ट करोगे, ये सिंगल फेज है या 3 फेज है। फिर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर एक ऐड रो बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक न्यू रो ऐड अप हो जाएगा। उस रो में आपको मैन्युफैक्चरर का नाम सेलेक्ट करना है, हर इस इन्वर्टर का कैपेसिटी कितना है वो मेंशन करेंगे और कितने क्वांटिटी है वो। फिर आपको ऐड सीरियल नंबर बटन पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो सीरियल नंबर एंटर करोगे और सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फाइन, जब आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तब। वैसे ही आपको पीवी मॉड्यूल के डिटेल्स एंटर करने हैं, ऐड रो पे क्लिक करिएगा, एक रो ऐड अप हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर का नाम सेलेक्ट करना है, आपको हर एक एक पीवी मॉड्यूल का कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे कितने आपने क्वांटिटी यूज़ किए हैं उस मैन्युफैक्चरर के वो मेंशन करना है और जितने आपके पास क्वांटिटी है उतने ही आपको सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड अप करना है। फिर हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर अपलोड फोटो करना है। यहाँ पे आपको एक जो आपने फोटो इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो उस साइट का फोटोग्राफ यहाँ पे आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो डीसीआर डिक्लेरेशन फॉर्म है ये मैंडेटरी है। और आप चाहो तो उसके अलावा जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन डीसीआर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैंडेटरी है यहाँ पे। So on this page, basically you have to add the geotag photo of the plant, what you have installed. The type of the file could be JPEG, JPG or PDF, and the maximum size is 2 megabytes. Then you have to upload the documents over here. Now in this drop down, the DCR declaration is mandatory, and you can add any additional document as per your requirement. Then you have to click on this save and next. On this page, basically you have to make sure that all the protection checklist and the safety requirements which are mentioned by the MNRE are installed. So you have to click on yes in every section and make sure that these safety uh, precautions are already installed. If you click on no in any of the case, then you cannot proceed ahead with the installation. Then here, this is the final submission page wherein you will see all the details uh, of this installation details. Here you cannot edit anything. This is just a final view of the installation details which are added by you. Okay, and there is a send to consumer button. So on click of this, similarly to the application, this again will be sent to the consumer for final submission. So either the form filled up by the vendor or the submit installation or the installation details, the final submission will be under consumer itself. So ये पेज पे आपको सारे आपने अभी तक जितने भी इंस्टॉलेशन डिटेल्स फिलअप किए हैं वो उसका समरी आपको इस पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप एडिट कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ व्यू कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है तो आपको बैक पे क्लिक करके उस पेज तक जाके वहां पे आप एडिट करके दोबारा आगे इस पेज पे आइए। नीचे आपको सेंड टू कंज्यूमर बटन दिया है, ये बटन के क्लिक पे ये जो इंस्टॉलेशन डिटेल्स है ये कंज्यूमर को सेंड हो जाएंगे। फिर कंज्यूमर इस डिटेल्स को रिव्यू करके फाइनल सबमिशन करेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो या सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स हो, जो फाइनल सबमिशन है वो कंज्यूमर के एंड से ही होगा। तो अब मैं सेंड टू कंज्यूमर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन पेंडिंग में चला गया है।
और अगर आपको ऐसे देखने हैं कि आपके ऐसे कितने फॉर्म्स हैं जो कंज्यूमर के एंड से आपने तो भर दिए, लेकिन कंज्यूमर के एंड से एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टेज में इंस्टॉलेशन एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग सिलेक्ट करो और क्लिक ऑन द सर्च. So this is what this form just we have filled up. This Mahesh Chandras Meshram. You'll see over here. Now we'll go on the consumer side. Okay, now this is the consumer for which we have submitted the installation details. Now under the actions, there were only three buttons shown, but now we see fourth as well. That's the submit installation details. Okay, uh, then uh, once consumer want to finally submit it, then he'll click on this button, and this is the page where he'll see the all the details that are filled up by the vendor. He'll see the vendor name, the application number, the DCR declaration, and everything. Also, he can view the work agreement. Here, he see the details of the inverter and the PV modules which are added. Then the photo of the plant, whether he has uploaded or not. Then the document, and finally at the bottom we have this acknowledgement where he'll select yes if he want to finally submit it. If he don't want, if he find any incorrect details over here, then he can again send it back to the vendor. तो ये पेज है जहाँ पे कंज्यूमर को उसके इंस्टॉलेशन डिटेल जो वेंडर ने भरा है वो दिखाई देंगे. इसमें आप ओपन करने के बाद सब वेंडर का डिटेल्स, इन्वर्टर का डिटेल जो वेंडर ने ऐड किया है, पीवी मॉड्यूल का डिटेल है, फिर डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटेक्शन चेकलिस्ट और फाइनल सबमिशन, ये सब दिखाई देगा. और अगर इसमें कंज्यूमर को लगा कि कुछ गलत फील्ड किया है तो वो सेंड बैक टू वेंडर बटन दिया गया है, उसके क्लिक पे यहाँ पे कंज्यूमर एक रिमार्क ऐड कर सकता है और वेंडर को डिटेल्स दोबारा भरने के लिए कह सकता है. अगर उसको कंज्यूमर को सब कुछ ठीक लगा तो वो यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेगा, एक्नॉलेज करेगा सारे डिटेल्स और सबमिट पे क्लिक करेगा. सबमिट के क्लिक के बाद कंज्यूमर को हम ये कह रहे हैं कि इस वेंडर को रेटिंग दिए. तो जैसे ही ये वेंडर काम था वो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर यहाँ पे उसको रेटिंग देगा और सबमिट कर देगा. तो ये अभी सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया. Then under the reviews and the ratings, these are this is the page where a vendor will see all the reviews and the ratings which he has received from the consumer. So here we are showing a total number of the reviews and the stars, like 5 stars, how many, the bifurcation of the stars that he has received. He has now this consumer has received 8 5 stars and 4 stars and 7 3 stars. Okay, then bottom we are showing the reviews that he has received. When he click on the more review, then the entire review and the feedback that he has give the consumer has given to this particular vendor, that will be shown. Okay. Then here on the edit, so ये रिव्यूज एंड रेटिंग्स जो पेज है यहाँ पे आपको वेंडर द्वारा दिए गए सारे रेटिंग्स आपको दिखाई देंगे. यहाँ पे हम टोटल जितने आपको रेटिंग्स अभी तक मिले हैं वो दिखाई दे रहेगा. फिर कितने स्टार्स आपको कब कितने मिले हैं वो दिखाई देगा. फिर यहाँ पे रिव्यूज है, रिव्यूज पे जब आप मोर रिव्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको सारे रिव्यूज जो अभी तक मिले हैं वो सब दिखाई देंगे. Then we click on this edit profile section where you can apply for additional state. So now this particular vendor has selected for, now this was an additional like national vendor, so he cannot of course apply for an additional state, but no, sorry, this was a multi-state vendor, so he can select for an additional state over here. He'll just select the state, fill up all the entire details over here, details in the new bank guarantee, and click on the submit button. Okay, and if he, at any given point of time he wish to edit the personal information, so he can also do that as well over here. Additionally, vendor can upload the documents such as the brochure, logo, site photograph,
the GST certificate, if any, that he can add up over here. The bank details which were already filled up during the registration, that as well can be modified. Then here we are showing at the bottom all the bank guarantees details which he has submitted till date. ओके सो यहाँ एडिट प्रोफाइल पेज है। यहाँ पे आप किसी एडिशनल स्टेट पे आप अगर अप्लाई करना है जाके, जैसे ये वाला डेटा है जो ऑलरेडी 7 स्टेट में ऑपरेशनल है, लेकिन अब उसको 8वें स्टेट में जाना है, तो वो उस स्टेट को सिलेक्ट करेगा और बैंक जो नया बैंक गारंटी है वो यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देगा। तो ये दोबारा से REC एडमिन के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आप ब्रोशर, लोगो, साइट फोटोग्राफ, ट्रेनिंग क्रेडेंशियल जो कि ऑलरेडी है वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप जो बैंक डिटेल्स है आप वो मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आप यहाँ सबसे बॉटम में आपको सारे बैंक गारंटी का इंफॉर्मेशन मिलेगा जो अभी तक आपने सबमिट किए हैं। The next is the contact details as per the DISCOM. So in all the states, like for this particular vendor is operational in the 7 states. So all the discoms of those particular states will be listed out over here, and you can mention the contact information of for this particular discom, like specifically for the Andhra Pradesh discom. If I want any dedicated person to be available, I can just mention it over here. सो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेज है इस पे आपको सारे स्टेट्स दिखाई देंगे जिसमें आपने खुद को रजिस्टर करवाए हो, और उन सारे स्टेट के सारे डिस्काउंट्स भी दिखेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्काउंट का कोई बंदा चाहिए जो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। Then the operational district is similarly what we have seen before during the registration. Like one can select in which state, in which district of the particular state I want to be operational. If I'm not selecting a particular district, then and my consumer belongs to that district, then he cannot select me. Basically, I won't, as a vendor, I won't be available in their list. So ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान देखे थे वैसा ही है कि अगर हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अभी औरंगाबाद को सिलेक्टेड में नहीं दिया है, जो राइट साइड में दिख रहे हैं वो सिलेक्टेड है और लेफ्ट साइड में अनसिलेक्टेड है। अगर तो यहाँ पे औरंगाबाद, अमरावती, अकोला ये सब मेरा सिलेक्टेड नहीं है, तो अगर मेरा कोई कंज्यूमर है जो इस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, तो वो जब वेंडर सर्च करेगा तो मेरा वेंडर का नाम उस कंज्यूमर को नहीं दिखाई देगा। तो the next is the product rate. This is a section where we can showcase like how much rate we can if we want. So first we'll select the discom over here, and then we'll click on the add rate. Here I'll define one range, say it's 0 to 1. The installation charges are 80,000 rupees. 0.1 or say 1 to 2. Sorry. So 1 to 2 capacity I have mentioned over here, and that specific rate will be shown to this particular discom. If I want like this rate is common for all the discom that I have registered in, I merely click on this checkbox and copy rate for all the discoms, and I can click on the submit. So यहाँ पे जो प्रोडक्ट रेट है वो हम डिस्कॉम स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले एक डिस्कॉम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने अजमेर विद्युत को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे ऐड रेट बटन पे क्लिक करना है, तो एक रो ऐड अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक
कैपेसिटी मेंशन करना है और फिर उसको आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो कि इतने कैपेसिटी का अगर इंस्टॉलेशन है तो इतना पैसा लगेगा। ओके, the next is the brand selection, wherein you can subscribe for any of the brand. Now here we have many brand, but in on the ground you will have at least a minimum maximum of 4 to 5 brands that you can enroll in. So if you want to select this particular brand, you click on this edit icon and then the checkbox is enabled, and then at the bottom you click on the submit request. So once you click on the submit request, then now I have selected Adani Solar as the brand. So the request will be sent out to the Adani Solar, and if he will approve it, then the pending status will change to the approve. ओके, ब्रांड सिलेक्शन में आपको वो सारे ब्रांड दिखाई देंगे जो अवेलेबल है। एक हम हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 ब्रांड्स ही दिखाई देंगे। उसमें अगर आपको अप्लाई करना है, किसी ब्रांड के लिए सब्सक्राइब करना है, तो आप यहाँ पे एडिट आइकन पे क्लिक करके उस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और बॉटम में एक सबमिट रिक्वेस्ट बटन है, उसको क्लिक कीजिए। तो इससे आपको वो जो सिलेक्टेड ब्रांड है उसको रिक्वेस्ट चला जाएगा, और तो एक बार वो उस ब्रांड से अपलोड हो गया है तो ये पेंडिंग विल चेंज इनटू अप्रूव। The next is the consumer subsidy status. So here basically you will see a list of all the application that you have filled in and the consumer has redeemed or has reached until this subsidy status, the project inspection state. So here you will see the details like the application number on which discount this you filled up the application, the consumer number, the name of the consumer, how much installation was made over here, and the subsidy amount, and the status of the subsidy, whether it is redeemed or not redeemed or it's pending for approval. Uh, इस पेज कंज्यूमर सब्सिडी स्टेटस पेज पे आपको एप्लीकेशन, वो सारे एप्लीकेशन दिखेंगे जिसमें आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किए हैं, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर, डिस्काउंट नेम, कंज्यूमर का नंबर, नाम, कितना इंस्टॉलेशन का कैपेसिटी था वो, कितना उसका सब्सिडी मिलने वाला है वो, और उसका सब्सिडी का स्टेटस अभी तक उसने कंज्यूमर ने रिडीम किया है या नहीं किया है। Then last is the change password functionality, wherein you can change your current the password. For that you have to enter your current password over here and the new password. If I'm if I'm entering a new password, that password should not be, I mean, should not be equal to the last 2 passwords used. So should be completely a new, which he has not used ever before. For example, if I'm using this old password, then he will give me a pop-up that the password cannot be same as the old password. And once we click on the submit, then the application will log out automatically in 10 seconds. Okay, so now we'll see a vendor. Like this is the home page of our application, and here on the home page we are showing this registered vendors list. Here on this page, user has to first select the state, the district, and apply. Then this particular all the vendors who are operational in the Aurangabad district of Maharashtra will be shown up over here, and user can click on this view profile button and can see all the documents.
and the information added up over here. So this is the case where when the consumer can find more information about you, like you can from your edit profile you can add up all the necessary details, and then consumer can have a